Friends, good afternoon. Today we will try to deliberate on the subject of journalism. We would try to know the journalism which is being done today in India, in Jammu and Kashmir, or in other states. How far this journalism is journalism in its real sense, in its real letter and spirit. क्या ये वही जर्नलिज्म है जो होनी चाहिए जिससे सोसाइटी को एक फायदा होता है और मुल्क को खुद जो है वो फायदा देता है जर्नलिज्म मीडिया के। तो क्या हम मान के चलें कि जो आज की जो जर्नलिज्म वो इन सब जो एथिक्स हैं, जर्नलिज्म के कोड है, उसके मुताबिक सब कुछ हो रहा है हमारे जर्नलिज्म के फील्ड, और यहाँ बिल्कुल इसके उलट जो जर्नलिस्टिक कोड है उसके बिल्कुल उलट जो है वो सब। तो पिछले 8-10 साल से, इससे पहले कि मैं थोड़ा सा इसके ऊपर डेवलप करूं, I would like that you should know what is the meaning of journalism in its real. So the definition, the meaning of journalism is, or you can understand it like this, that it is the activity or it is the profession of writing, profession of writing for magazines or news websites, or preparing news for the purpose of broadcast. In nutshell, I would say that in its substance, that basically journalism, apart from writing, it is an active, it is the activity of collecting news from different sources, then disseminating it in the public domain for public। कहने का मतलब कि एक इसमें राइटिंग की एक्टिविटी है जो हम न्यूज़पेपर्स के लिए या तो मैगजीन्स के लिए लिखते हैं या न्यूज़ वेबसाइट पोर्टल्स के लिए लिखते हैं। मैं आपके पोर्टल से आपको मैं एड्रेस कर,
it is the activity which I am doing. It is activity which pertains to the domain of journalism. तो ये सब चीजें जो है जर्नलिज्म में कि न्यूज को कलेक्ट करके फ्रॉम डिफरेंट सोर्स उसको पब्लिक डोमेन में लाया जाता है ताकि पब्लिक जो उसके ऊपर एक ओपिनियन जो है फॉर्मुलेट कर सके और डिफरेंट सोर्सेज का मतलब ये हुआ कि ये जो है न्यूज इट मे बी फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, इट मे बी फ्रॉम पब्लिक साइड, it may be from private side. So there are so many areas from where the news collection can be done. लेकिन हमें देखना है कि which when we collect all these news from different sources, then it is the job of the owner who is owning the newspaper or the website or the magazine or if owner is not capable enough, then certainly they have appointed their editors who sort out the news pieces in the public. ये न्यूज जो है ये पब्लिक के लिए अच्छी है, ये पब्लिक तक जानी चाहिए। ये न्यूज जो है ये पब्लिक के लिए हार्मफुल है, ये इसको डिस्कार्ड करना है, इसको डिसेमिनेट नहीं करना, ये सारी चीजें वो प्रोफेशनली एथिकली from the code of journalism, all these things are weighed and measured by the staff of the newspaper, websites, portals, or magazines. And only those news which are of highly public importance are disseminated for men. So, really, take precisely to understand the concept of journalism, उसके बारे में मैंने आपको कि इस चीज को आप अपने ध्यान में रखिए, दिमाग में रखिए कि हमें वही न्यूज पब्लिक में पब्लिक की डोमेन डिसेमिनेट करनी है जो पब्लिक इंपॉर्टेंट, जो पब्लिक को डिस्टर्ब करे, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करे, पब्लिक माइंड्स को डिस्टर्ब करे, सोसाइटी को, कम्युनिटी को डिस्टर्ब करे, वो न्यूज़ें हमने डिस्कार्ड कर to avoid such disturbances in society and to maintain tranquility in this society. So all those news, it has no importance for the public, and not to be known in the public domain. तो ये जो ethical discourse, जो ethical जो meaning, purpose of journalism का बताया, और ये भी मैं आपको बता दूं कि इस फील्ड में जो लोग काम करते हैं उनको हम जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट वो उसको निभाते हैं। कोई न्यूज रिपोर्टर है,
कोई इंटरव्यू कंडक्ट करता है, कोई राइटिंग का काम करता है, तो ये सारी जो ये डिफरेंट जो एडिटर्स हैं और भी ज्यादा लार्ज बोर्ड है किसी भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो मीडिया का जो जर्नलिज्म का जो फील्ड, ये एक बहुत इफेक्टिव टूल है, नॉट इन द हैंड्स ऑफ द मीडिया पर्सन बट द स्टेट। तो इसकी जो एक्सप्लॉइटेशन है, इट कैन हैव a stinging impact on your society. The slightest misuse of this tool can lead to disturbances, can lead the governments to be high-handed, go out of control. Thus, in constitutional democracies like ours, जो मीडिया है, जिसमें जर्नलिज्म का काम होता है, उसको हमने एक प्रोटेक्टिव जो स्तंभ है, पिलर है, उसका रोल जो है असाइन किया। मीडिया इज acting as fourth pillar of apart from the other pillars. इसका क्या मतलब है? ये मतलब कि हमने जो मीडिया में जो लोग काम करते हैं, जो मीडिया की जो ऑर्गेनाइजेशन, एंड ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर regulated by law. तो अगर ये ना दोबारा रेगुलेटेड हैं, इसका ये मतलब कि they have to act within within their bounds. They have to act within their constitution, within their legal bounds. They cannot go beyond that, because if we permit these organizations to go beyond the established conventions, the law, the norms of journalism, the code of ethics of journalism, then it will definitely uh, these organizations will un- out of control, which consequently will lead to the severe disturbances
in the society, which we can't permit constitution. We cannot permit these organizations, media organizations, to go uncontrolled. And that too in the public interest. We have to control these activities of the media people, which are injurious to the health of the society. We cannot say that if we resort to restrain them to that extent, then their free speech is, free expression is cutting. No, not at all. But certainly, if they are crossing the limits to which they should restrict themselves, then the government has to control. The government has to curtail their such harmful activity in public interest, in the interest of constitution. तो फोर्थ पिलर का ये था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल के जो प्रिंसिपल्स, मीडिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ड्यूटी है कि वो उन प्रिंसिपल्स को प्रोटेक्ट करे, ना कि उन प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट काम करे बाय throwing themselves in the lap of the government. मीडिया का काम है गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना, उसकी पॉलिसीज को क्वेश्चन करना और लोगों तक पहुंचाना क्रिटिकली how this policy is benefiting to the people and how this policy is harmful. तो जब एक पब्लिक ओपिनियन बनता है तो वो गवर्नमेंट के ऊपर एक चेक का काम करता है, और जो गवर्नमेंट है वो जो है वो वोट के दौरान लोग डिस्प्ले करते हैं, इन सब लोगों को जो गवर्नमेंट, they are there because of the will of constitution is will of people. To any government which comes has to respect the constitutional principle, the will of the people, because because it is expressed, will is expressed the medium of their votes. तो और यही चीज जो है यहीं पे मीडिया का, आज it is desperate to disgusting say this, that in India today the media 99.9% electronic print media has assumed the role of media in India being controlled by the government and their cronies, the capitalist friends. It is owned by the super wealthy today in India. It is biased today. You see
The quality of their debates on electronic media is, is shattering, is disgusting. And audaciously, they are promoting enmity amongst people. This is not the role. It has been assigned legally and constitutionally to the media. Media has to protect. It's their duty to protect the constitutional principles being inculcated, trampled by anyone. But media has discarded this role, and it has become a Godi media. It is in the lab. This media is in the lap of the capitalists and the government. They are not projecting the human sufferings in the hands of the power lords. Rather, today's media in India is aggravating the human sufferings by siding with the power lords. और unfortunately, कोई भी media accept a very few innumerable, negligible proportion जो मीडिया में कुछ कुछ कोशिश कर रहे हैं कि रियल जर्नलिज्म अटेन करके रखा जाए और मेंटेन करके और सस्टेन करके. Some people are making hard efforts to sustain, to attain and sustain journalism. Though they are being harassed by the power, but still they are sticking to journalism. तो जो नई जो ब्रीड इस फील्ड में सोशल मीडिया के जरिए जो है उस जर्नलिज्म का तो समझना ही बहुत इसकी ये रेडी वाले के पास चले जाना, चने भटूरे दिखा देना, ये किस किस्म की जर्नलिज्म? किसी दुकान पे छोले भटूरे खाने चले, ये जर्नलिस्ट का काम नहीं. ये जर्नलिज्म का फील्ड कहीं पे झगड़ा हो रहा है तो वहां खड़े होकर उसका वीडियो बना के वायरल कर. What sort of journalism has such journalism any relevance in this world? Can we say this is the relevant journalism today? This is what the journalism is. रेडी वाले को, छोले वाले को, भटूरे वाले, हलवाइयों को, सब्जी वालों को प्रोजेक्ट कर. अगर यही लोग जो इन्फ्लेशन को प्रोजेक्ट कर,
सब्जी वाले के पास जाएं और पूछें उसको सब्जियों के क्या रेट्स। वहां पे जो लोग खरीदने आते हैं उनको पूछे कि क्या आर यू सेटिस्फाइड विद दिस रेट। अगर नहीं हो तो क्यों नहीं, किसका कसूर है? गवर्नमेंट जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल क्यों नहीं कर रही? तो ये बताएं। आप यहाँ आके छोले खाएं, यहाँ आके भटूरे खाएं। आज मैं पूरी खाने आया हूँ यहाँ इस हलवाई के पास, कल मैं वहां पूरी खाऊंगा। सॉर्ट ऑफ। आप बताओ इन्फ्लेशन के बारे में। मार्केट में अगर हम सोशल मीडिया के जरिए ही काम करें, न्यूज वेबसाइट्स के ऊपर, न्यूज पोर्टल्स के ऊपर, तो the only difference is that we are it is a sort of microcosm जो हमारा ये जो वेबसाइट्स का जो वर्ल्ड, सोशल मीडिया का जो वर्ल्ड, ये इंटरनेट के ऊपर, तो ये एक इट इज अ सॉर्ट ऑफ माइक्रोकॉस्म ऑफ द रियल वर्ल्ड, प्रैक्टिकल। तो उसी वर्ल्ड का जो बाहर है, क्या एक छोटा सा दुनिया जो बन जाती है एक्टिविटी। तो इस माइक्रोकॉस्म, इस वर्ल्ड के लिए वर्चुअल जो वर्ल्ड है, एक रियल वर्ल्ड है, एक वर्चुअल। तो हम जब सोशल मीडिया के जरिए काम करते हैं, वेबसाइट्स, तो इट इज ए वर्चुअल वर्ल्ड। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि दो लड़कों में झगड़ा हो गया, वो एक, ये इस जर्नलिज्म की रेलेवेंस। अगर दो लड़कों का झगड़ा हुआ है, अगर उसमें आप ये बताओ कि पुलिस का क्या रोल रहा, क्या पुलिस वहां पे एक्टिव थी, क्या किसी ने इंफॉर्मेशन दी पुलिस को कि यहाँ पे एफरे की प्रॉब्लम हो गई है, असॉल्ट हो रहा है? क्या पुलिस ने एक्ट किया उस इंफॉर्मेशन के ऊपर या ना किया? पुलिस के रोल को एक्सपोज कर, ये इशू इम्पोर्टेंट है कि पुलिस जो है क्राइम को कंट्रोल करने कितना क्विकली काम करती है। दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट दैन टू मेक ए क्लिप ऑफ दोज फाइटिंग टू बॉयज एंड टू मेक दैट वीडियो वायरल ऑन सोशल। ये जर्नलिज्म का, ये फोर्थ पिलर वाला कोई। पुलिस के रोल को बताइए, पुलिस क्या कर रही है, पुलिस की एक्टिविटी को मॉनिटर करें, कितना क्राइम कंट्रोल हो रहा है, उस पे काम। देयर आर सो प्रोजेक्ट्स। तो जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं इंसान की, उसको एक्सप्लॉइट मत करिए। रियल इश्यूज, डेवलपमेंटल इश्यूज, अनएम्प्लॉयमेंट का कितना बड़ा आज प्रॉब्लम है हमारी। मैंने सोशल मीडिया के ऊपर बहुत, यहाँ पे नामी नामी सोशल मीडिया जम्मू में काम करते हैं, वीडियोस आते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर।
ट्विटर के ऊपर, लेकिन मैंने उनको कभी इन इश्यूज के ऊपर बात करते हुए कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक पब्लिक इश्यू है, पब्लिक सफर कर रही है, गवर्नमेंट जो है उसका एक रोल है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। इसके ऊपर आप अपना ओपिनियन रखिए, लोगों से डिस्कोर्स करिए, लोगों के जो है इंटरव्यूज करिए, यंगस्टर्स के इंटरव्यू करिए, यूथ के जो है वो पर फेसिंग द acute unemployment problem। 10,000 लोगों को आपने किसी मेले में कुछ कर, तो उससे काम नहीं। हमारी आर्टिफिशियल लेक का इश्यू है यहाँ, उस पे काम करिए आप। आपको आपको सो कॉल्ड लीडिंग सोशल जर्नलिस्ट जो बड़े एजुकेशन में जो विश्वास रखते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे, इन चीजों के ऊपर काम करिए ना। आप लोगों को बताइए कि भाई आर्टिफिशियल लेक, बताइए लोगों को आर्टिफिशियल लेक के बारे में। ये प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ, ये प्रोजेक्ट कब कब खत्म होना था, इस प्रोजेक्ट के ऊपर जब शुरू हुआ था तो लागत कितनी थी, और आज के दिन में उसकी लागत कितनी है, कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है इस प्रोजेक्ट का। आर्टिफिशियल लेक जो है जो जम्मू तवी के ऊपर को गवर्नमेंट ने प्रोपोजिशन रखी हुई है, उसका लोगों को क्या फायदा होने वाला है, कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी ये प्रोजेक्ट। जम्मू के आप सड़कें देखिए, जगह जगह खुदवाई है, आप देखिए, इनको मॉनिटर करिए, इन प्रोजेक्ट्स को एक्सपीडाइट करवाइए, लोगों के विचार लीजिए इनके ऊपर, लोगों की लड़ाइयाँ दिखाने के बजाय, हलवाइयों के पूड़ियाँ खाने के बजाय, रेडी वालों के छोले खाने के बजाय, आप इन चीजों के ऊपर काम करिए। ये लार्जर जो पिक्चर है, ये जर्नलिस्ट, ये जर्नलिज्म का काम, क्या का काम, तो आपको पहुंचाओ, तो तभी हम कह सकते हैं कि जर्नलिज्म की कोई रेलेवेंस है आज के। अदरवाइज जब आप when you will not focus on the issues of the public importance and make people aware regarding those issues, regarding the functioning of the government, the ways of the government, and unless you question the ways of the government, your journalism is of relevance. That journalism is irrelevant. We should discard such journalism if it cannot do any good. तो ये सारी जो बातें आज के जर्नलिज्म में, मीडिया के एक इम्पोर्टेंस रख, ना कि आप कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब करो थ्रू योर बैड जर्नल बाय यूजिंग मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया as an instrument, exploit people to create fetch
sort of journalism that interesting, the shameful part that we have forgotten our. We carry cameras, mics, and all that, cover fight among people, among mundas. There is no journalist in except a few, two or three, who are raising the voice of the farmers' issue, unemployment, inflation, public health problems, housing problems, food, lodging, many issues of that importance. It really belongs to the dignity of the human. Life is to live with dignity. The cooking gas, which was so much affordable during the previous regimes, it has become unaffordable. Have you taken up that issue? Have you raised that issue, you journalists, you media persons, you media organizations? I have never heard any debate. I have never seen any any interview either on the electronic media or on the social media. But I see these fights which are which are thrown by you people in the public. So see the international media, how they are playing, how they are acting, how they are operating. At least emulate that media, how they behave on their channel. We, we are not even good to emulate such ethical media laws. We feel we are above everything. Nobody can control us. We can do any damn. Public is watching. Public is observing you. Public is observing your role today, and you have to answer it later. They will drag you to do to towards ethical role of the media. Public is watching, monitoring. Later, you have to answer. How long you will? So, what I wanted to convey is that media, either the electronic media or the print media or the social media, has a role to play in their societies. Society develops because of the ethical, good quality that the media keeps, the quality information that media
disseminates in the public domain or public opinion. Society develops through good quality information flow and digressed if society is misinformed by you, by your media, either it is social media or it is print media or it is electronic. So I only wanted to say something on the relevance of journalism, what it means, what it not means. The projections which I have made regarding the relevance of them, you also think on these projections. And if you have a view, wise view, you can comment. Thank you very much. Have a